ପିଲାମାନେ ଏ ଭିଡିଓରେ ଆମେ 2024 जो GA2 रही केमिस्ट्री G2 केमिस्ट्री इलेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ए सब रो मु सॉल्यूशन देबी केवल 2024 नुह आमे 2023 2022 मु ए सब क्वेश्चन आनिबी तम भाई तो तमे खाली देखो आर पार्ट 1 पार्ट 2 आनिबी सेमती 2023 रो पार्ट 1 पार्ट 2 सब थरो पार्ट 1 पार्ट 2 आनिबा देन सेमती देन लॉन्ग क्वेश्चन आ बाकी शॉर्ट टाइप सब आनिबो क्वेश्चन रो सॉल्यूशन देखो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे तो पढ़थिला कोन व्हाट इज लुकास रिएजेंट phenol is dash acidic than methyl alcohol arrange the following molecules in increasing order याको increasing order रे लिखियो जो acidic acid chloric acid और dichloric acid को then the value of STP thermodynamics रे STP रो value कोन thermodynamics रे spontaneous reaction कोन ionic product देखो आर आंसर कोन ये पार्ट 1 रो सेमि पार्ट 2 रो भी क्वेश्चन आंसर आनिबा What is liqueous reagent? Liqueous reagent को liqueous reagent is a mixture of copper chloride और hydrochloride mixture को हमें कौन कहबा ना liqueous reagent यूज होजी कोन ना टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल अल्कलाइन सेमती phenol is dash acidic than methyl alcohol phenol is more acidic than methyl alcohol कौन भाई ना because the phenoxide ion is stabilized by resonance आपको अरेंज करिया कहिछि तो अरेंज तमे करियो को अनुसार ना एसिडिटी अनुसार द ऑर्डर इज ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी इज एसिडिक एसिड आसीबो ताठो टिके मोर आसीबो कोन इंक्रीजिंग माने कम रु बढ़ी बढ़ी चलिबो एसिडिक एसिड तापर क्लोरो एसिड देन डाइक्लोरो एसिड कम है ना दिस इज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एटम्स को नेकी इंक्रीजिंग करूची then the value of acid in thermodynamics STP रो वैल्यू थर्मोडायनामिक्स रे कोन होबो ना STP रो माने कोन फास्ट बिले स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर इन थर्मोडायनामिक्स आर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm ओके फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन G इज ऑलवेज ये कोन होबो ना नेगेटिव ही रहबो नेगेटिव को केते पॉजिटिव केते 0 केते देखिबो द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज डैश देन Kw at 100 degree celsius the ionic product of water at 100 degree celsius is greater than Kw at 25 degree celsius because Kw increase with temperature then देखो pH 10 to the minus 5 m देछि कारण ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रो इज डैश ताले ये केते होबो स्ट्रांगेस्ट बेस होबो बुझेला 14 minus pH 9.3 आंसर होबो then what is reagent used in Clemmensen reduction कोडा यूज होचे ना हमर जिंक अमलगम टा मिसियो काहे हम कोन मिसले जिंक आ कोन मर्क्यूरी जोड़ा Ag एना हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये थिला पिले पार्ट 1 नो क्वेश्चन पडिथिला तार सॉल्यूशन सिमदी पार्ट 2 रो देखिबा पिले पार्ट 2 रो सिमदी कोन क्वेश्चन पडिथिला डिफाइन एन ओपन सिस्टम 1.5 मार्क आसीओ 8टा है नै तो 12 मार्क रो ये 12 से शॉर्ट क्वेश्चन एडी हैला 20 डिफाइन एन ओपन सिस्टम को व्हाट डू यू मीन बाय हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम देन फॉर ए डेसिमोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिड HK अल्फा देथियो ताकू केमदी कैलकुलेट करियो परसेंटेज आ बफर कैपेसिटी what is Friedel-Crafts alkylation or example explain why primary alkyl halide prefer SN2 reaction where is tertiary alkyl halide prefers SN1 name two oxidizing agents to oxidize primary alcohol to aldehyde explain why aldehyde are more reactive than ketones explain the nitration reaction of phenol why ethanol responds to iodoform reaction तो ये सब दियो सॉल्यूशन एबे हमें देखिबा बिले First is define an open system. Open system we can define करिवो an open system is a thermodynamic system that can exchange both matter and energy with its surrounding. What do you mean by heat capacity of a system? Heat capacity of a system is the amount of heat required to change the temperature of the system by 1 degree. Buffer capacity कोन buffer capacity is the measure of the ability of a buffer solution to resist change in pH when small amounts of acid or base are added. What is Friedel-Crafts alkylation? So given an example, Friedel-Crafts alkylation is an electrophilic aromatic
substitution reaction that introduces an alkyl group into an aromatic ring using the alkyl halide and Lewis acid catalytic like LCl3. Example कौन होगा ना हमारा reaction of benzene with methyl chloride to form toluene. The next question कौन थिला explain why primary alkyl halide prefers SN2 reaction whereas tertiary alkyl halide prefers SN1. Answer होगा primary alkyl halides prefer SN2 reaction due to less steric hindrance allowing a backside attack by the nucleophile territory. Alkyl halides prefer SN1 reaction due to steric hindrance and stability of the territory carboxylenes intermediate. Then G, name two oxidizing agents to oxidized primary alcohol to aldehyde. Two oxidizing agents are going to have na amara PCC. PCC means hobo pyridinium chlorochromate and desmartine pyridine. Explain why aldehyde are more reactive than ketone. Aldehyde are more reactive than ketones due to less steric hindrance and greater electrophilitic of the carbonyl carbon. Explain the nitration reaction of phenol. The nitration of phenol involves electrophilic aromatic substitution with a nitronium ion, Na2+, facilitated by the activating effect of the hydroxyl group on the aromatic ring. Why ethanol responds to iodoform reaction? Ethanol does not typically give a positive iodoform test. However, compounds like ethanol that can be oxidized to acetylide, which does not give iodoform, or those with a methyl group of attached to a carbonyl or sodium alcohol like secondary alcohol of methyl group can give positive iodoform test. Ethanol itself does not respond positively. तो ये थे पार्ट 1 पार्ट 2. नेक्स्ट टाइम में जहाँ भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे से क्वेश्चन भी सॉल्व करिवा ए पीडीएफ टा जहार दरकार से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन कर दे मु एटा सेंड करबी. ओके.